Hello students, good evening everyone. This video will be the last video for dimensional analysis. Okay, till now we are doing dimensional analysis. We are actually focusing on the 4 different types of uses, and each type we are doing few numericals. Right now, this is the last type, type number 4, finding dimensions of unknown quantities using dimensional analysis. Now what you will have? You will have an equation. In the equation, few quantities dimension you don't know. It's not given to you like that. Those quantities are what? Whether it's a mass, velocity. If it's given whether that quantity is mass, velocity, or what, then you can directly find the dimension, right? But in the equation, few unknown quantities. That means the quantities which I don't know. This quantity is which physical quantity? Okay. Then how to find the dimensions? So we use a concept here. What is that concept of thinking? The only same physical quantities can be added or subtracted. Now, these things I have discussed earlier also. We know mass is added with mass. Or 10 meter is added with 10 meter or 20 meter. That means distance is added with distance. And we will get distance here, 30 meter. So distance plus distance becomes a distance. Mass plus mass becomes a mass. But have you ever seen in physics like this? Anywhere. 10 meter is added with 30 kg. It becomes 40 kg meter. ऐसा पढ़ा है कभी? The distance is added with mass. Not possible. So different physical quantities cannot be added. Yes, they can be multiplied. It is possible. 10 meter into 30 kg is 300 kg meter. This is possible. मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि देखो मुझे पता है ना फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. These two physical quantities are different. They can be multiplied and we get a different physical quantity. All the 3 physical quantities are different. But if I say something equals to something plus something, A equals to B plus C, something equals to something plus something, then since they are adding, that means these two must be same physical quantity. And they adding and they are getting A. That means A, B and C all are same physical quantity. Mass plus mass becomes a mass. So B plus C, if it is a physical quantity, this physical quantity and this physical quantity will be similar. Mass, it will be mass. Velocity, this will be velocity. Force, this will be force. So these things can happen only if all 3 are in same physical quantity. That means that in short we have written that only similar physical quantities can be added or subtracted. Okay, but multiplication and division can be done for dissimilar quantities also. We are not interested in that. So here we will focus on those parts of the equation which are adding up together or subtracting together. Understood? So we will search for those parts of the equation where 2 quantities are adding or subtracting. Let me give you an example. Okay, P equals to A plus B by C plus D. For example, in any equation you face of this type, P equals to A plus B by C plus D. Now try to search which 2 things are adding up. A is adding with the whole quantity B plus C by D. A is not adding with B alone. B by C plus D. B by C plus D. After doing all those things, whatever you will have here, that thing is adding with A. And after adding, they are getting P. That means dimensionally, P and A are equal. This whole thing and P are equal. Because something plus something is equal to this. That means this something will be equal to this. This something will be equal to this. Okay? Understood? And see this part. C and D are adding. That means these two must be similar quantities. C equals to D. Dimensionally. If I say C equals to D, that doesn't mean their magnitude will be same. Only dimensionally. Dimensionally मतलब क्या? दोनों same physical quantity होगा. तो mass होगा, या तो length होगा, या तो distance होगा, velocity होगा. Okay? Understood? Clear? So you need to see what are the things which are adding up. Those two are equal. So we can say this and this. P is A. We can also say ये दोनों add हो रहे हैं, so I can write also like this: A is equals to B by C plus D. ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों add हो रहा है ना.
तो ये इक्वल टू ये भी होगा, तो ये और ये तीनों इक्वल होगा क्योंकि इन दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड होके ये आ रहा है इसलिए। अगर ये मल्टीप्लाई होके आता तब इक्वल नहीं होता। क्लियर? नाउ देयर आर few special cases which you find in entrance or you may face a question in boards also. Trig log e to the power. With trig we have discussed already. With trig whatever you will have here that will be dimensionless. Now with log log के अंदर कुछ भी लिखा होगा that will be dimensionless. E के पावर में कुछ भी लिखा होगा that will be dimensionless. Okay. Now how to write in a notebook? First we write on this, then below this we will write on this, and then we start with the question. Okay. Now let's take an example about this. Example 1. Log of a plus b by c plus d. Now see, try to understand. This a is adding up with the whole thing. So these two are same dimension. And these two are the inside log. So inside log whatever we have that is dimensionless. So a is adding with b by c plus d. That means a and b plus c, b by c plus d are equal dimensionally. Moreover, these terms are inside log. That means each terms are dimensionless because whatever we have inside log must be dimensionless. That means a is dimensionless. M0, L0, T0. Then again this whole thing b by c plus d is again dimensionless. M0, L0, T0. Okay, but c and d are adding. C and d are equal. But they will not be dimensionless. This whole thing is adding with a ना, तो ये पूरा डायमेंशनलेस होगा इसके साथ, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, बट ऐसे b by c plus d पूरा डायमेंशनलेस है. ओके, बट c एंड d डायमेंशनलेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ना. टाइम बाय टाइम प्लस टाइम. ओके, तब तो ये पूरा कैलकुलेट करने से टाइम बाय टाइम प्लस टाइम इज टाइम आ गया ना डायमेंशनलेस. तो जरूरी नहीं है कि ये भी डायमेंशनलेस होगा. नो, हाँ ये दोनों इक्वल होगा. डायमेंशनली दे विल बी इक्वल बिकॉज दे आर एडिंग अप. ओके, बट ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों डायमेंशनलेस होंगे. यू अंडरस्टैंड? हाँ, ये जरूरी है कि ये पूरा डायमेंशनलेस होगा. सेम यू कैन फेस विथ ट्रिग्नो के अंदर a प्लस बी बाई सी प्लस डी. सेम यू कैन फेस पावर के ऊपर e के पावर में a प्लस, देन द सेम थिंग विल फॉलो, एग्जैक्टली सेम थिंग. Okay, so let's start with the question regarding these things. Okay, the question number 1, I'm reading the question. The velocity v, small v, of a particle depends on time small t by relation small v equals to small a plus small b into small t plus c by divided by d plus small t. Okay, this is the equation given to you, and we know v is the velocity, we know t is the time. Now what the question? Find the dimension of a, b, c, d. मुझे डायमेंशन निकालना है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी का. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू सर्च व्हिच टर्म्स आर एडिंग अप. तो सी नाइसली, दिस ए इज एडिंग विद b by b into t, then this b into t is adding with this whole thing. ये ऐड हो रहा है इसके साथ, ये ऐड हो रहा है इसके साथ, और तीनों ऐड होकर क्या आ रहा है? वेलोसिटी ना. दैट मींस कैन आई से डायमेंशनली a will be equals to velocity, bt will be equals to velocity, c by d plus t also equals to velocity, because these things are adding up and we are getting a velocity. That means ये velocity plus velocity plus velocity velocity होगा ना. velocity plus mass तो नहीं हो सकता ना, तीनों velocities होंगे. clear? and d और t ऐड है ना, मतलब d equals to t. ओके, तो ये तो इक्वेशन बना. अब मुझे डायमेंशन निकालना है, तो a का डायमेंशन क्या होगा? a किसके बराबर है? वेलोसिटी के. तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? मीटर पर सेकेंड. हो गया, दिस इज द a डायमेंशन. साथ में d भी निकाल लेते हैं. व्हाट इज d? d is t. t is what? टाइम. so t, capital T, so t is the dimension of capital D. okay, next bt equals to v. यहां से तुम्हें किसका डायमेंशन निकालना है? b का. तो व्हाट इज b? v by t. अब डायमेंशन डालो, मीटर पर सेकेंड बाय व्हाट इज वेलोसिटी? मीटर. लेंथ पर सेकेंड टाइम, तो ये इज टाइम. सो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये l t minus 2. तो b का डायमेंशन भी मिल गया. क्लियर? नेक्स्ट क्या बचा? a मिल गया, d मिल गया, b मिल गया, c बचा है. c कहां पे? ये रहा. c by d plus t equals to v. ओके, जिससे तीसरा डायमेंशन निकालना है c का. व्हाट इज c? v into d plus t. अब डायमेंशन डालो. व्हाट इज वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज d? d is time, so t plus what is small t? Time, capital T, t plus t.
डी का डायमेंशन कैपिटल टी, स्मॉल टी का डायमेंशन भी कैपिटल टी है ना, क्लियर। सो व्हाट इज टी प्लस टी? 2t। नहीं, 2t नहीं होगा, हम अलजेब्रा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम डायमेंशन कर रहे हैं। t प्लस टी, टाइम प्लस टाइम विल बी टाइम। तो c कितना आ गया, सोचो, t माइनस 1 t प्लस 1 कट जाएगा l, सो c का डायमेंशन हो गया l। यू अंडरस्टैंड क्लास? सो in similar fashion we will do few more sums, but this is the last video. We will complete this topic by this video only. Okay, let's go to the next one. Okay class, question number 2. In the equation y equals to a sine bracket omega t minus kx, omega you know na, style is w, obtain the dimensional formula of omega w and k, small k, given x is distance and t is time. अब कान फाड़ के सुन लो, कहीं पे नोट बना के लिख लेना आप, ठीक है ना। ये सुनो अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कभी कभी लिखा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला और कभी कभी लिखा होता है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन इन बोर्ड्स वेदर इज रिटन ओनली डायमेंशन निकालो और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर एंट्रेंस का यही क्वेश्चन है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बोले so this is the dimension formula, but अगर dimension बोले then the powers, this I discussed in the initial part of the, just when we started dimension analysis, powers are called dimensions, okay। so dimensions मतलब powers और dimensional formula मतलब this whole thing, you understand this? Now let's do the sum. So I hope you made a note, okay। now we need to find the dimension of omega, that is w and k, right? Now these things, what we need to do in these questions, see which two are adding up. So this omega t is adding, subtracting with kx, मतलब इनका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये अंदर किसके, तीनों के अंदर है ना, मतलब ये डायमेंशनलेस होगा, so omega t is dimensionless. The solution is very easy, yeah, it's very short also, but the question is that this thing should be clicking in your mind कि वो डायमेंशनलेस होगा क्योंकि वो साइन के अंदर है, okay। so omega t dimensionless, so what is omega? Dimensionless, m0 0 t0 by t नीचे आ जाएगा। what is t? t is time, कैपिटल t आ जाएगा। ये तो t, ये t डाला था, अब इसका डायमेंशन डालो कैपिटल t, ये ऊपर जाएगा तो t minus 1। so what is dimension of omega? t minus 1। dimensional formula of omega is t minus 1, but what is dimension of omega? minus 1। बोर्ड्स में सब चलता है, ठीक है ना। okay, next kx is also inside, it is adding up, subtracting, एक ही बात है, adding subtracting, तो ये भी dimensionless होगा। so what is k? dimensionless, m0 l0 t0 by x। now what is dimension of x? x is what? distance, l, so when it goes l minus 1 हो गया, k is l minus 1, dimension मिल गया, okay, understood। now sometimes the same question asks like this, instead of saying find the dimension of omega and k, they will say find नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा कोई क्वेश्चन बना रहा हूं मैं इसी में, यू कैन राइट नो, अभी दिमाग में आया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के। अगर ऐसे पूछ दे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड बाई के, एंड नहीं, यहां पे क्या, तो ओमेगा अलग से निकालो, के अलग से निकालो, तो ओमेगा बाई के निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, ओमेगा निकाल लिया, के निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट कर दो ओमेगा बाई के, अंडरस्टैंड। या तो अदर ऑप्शन ओमेगा टी एंड के एक्स दोनों इक्वल होगा, यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑप्शन। ओमेगा निकाल लिया इस तरीके से, के निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर आंसर आ जाएगा। या तो ये दोनों तो इक्वल है ना डायमेंशनली, डायरेक्टली इक्वेशन निकालो, अलग से ओमेगा अलग से के निकालने का जरूरत क्या है, मुझे तो ओमेगा के तो नहीं पूछा है, आई हैव बीन आस्क्ड फॉर ओमेगा बाय के, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो यहां से ओमेगा बाय के आता कितना है, एक्स बाई टी, ओमेगा बाई के कितना, एक्स बाई टी, व्हाट इज एक्स, एल, व्हाट इज टी, कैपिटल टी, सो एल टी माइनस 1। तो या तो ऐसे निकाल लो, अलग से ओमेगा एंड के निकालने की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड क्लास, ओके, क्लियर, ओके। सो यहां से मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन वैंडर VANDR, वैंडर वाल्स इक्वेशन। नाउ माथा में टेंशन मत लेना कि व्हाट इज वैंडर वाल इक्वेशन, आई डोंट नीड अ वैंडर वाल इक्वेशन, व्हाट इज दैट आई डोंट नो, जस्ट फॉरगेट अबाउट, दिस इज अ इक्वेशन, ओके। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है डराने के बच्चों को, इस इक्वेशन का नाम है ये, दिस पर्सन हैज
invented this equation. That's why. So you don't have to worry about these parts. Okay. So what is the equation? Capital P plus A by capital V square whole bracket. Again bracket capital V minus B small b equals to RP. Where everything is given. P is pressure, capital V is the volume, T is the temperature, R is the real gas constant. इसे देख के डरना नहीं है. क्या निकालना है? Find the dimension of A by B. So I told you whether they ask you dimension or dimension formula, boards में दोनों चलता है. Okay, entrance पे dimension मतलब powers. So what you need to find? A by B. ठीक है ना? तो मुझे अलग से A अलग से B दो तरीका है. अलग से A अलग से B निकालो और फिर डाल दो, या तो डायरेक्टली A by B का इक्वेशन निकालो. जैसे मैंने ये करके दिखाया. So I am doing this question in two different ways. First method, second method. Two ways I have did this question. Okay, let's check out the first method. Plus कौन से quantities adding or subtracting हो रहे हैं? P is adding with A plus B by square and V is subtracting with B. Okay, अब मैं ये इक्वल्स टू ये नहीं बोल सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, लेकिन ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, मतलब दोनों इक्वल होंगे. So V B, and again this P is adding with A by B square. That means P will be equals to A by B square. So the things which are adding they are equal. तो यहाँ से B का डायमेंशन निकल गया. What is V? Volume L cube मीटर क्यूब. ठीक है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. नेक्स्ट व्हाट इज, यहाँ पे किसका डायमेंशन निकालना? A का. तो व्हाट इज A? P into V square. P into V square. डायमेंशन ऑफ P का व्हाट इज P? प्रेशर. फोर्स बाय एरिया वॉल्यूम स्क्वायर. फोर्स का kg. Okay, mass into acceleration meter per second square into what is volume unit? Meters cube whole square. This whole square, this square is here. Understand? Divided by area meter square. Now solve it. You will get like this: kg meter 5. Yes. What is kg? And power is 1. Meter is L. Power is 5. Second is time t minus 2. So you got A, you got B, but they didn't ask you A and B. They asked you A by B. So find therefore A by B. A का डायमेंशन डालो, B का डायमेंशन डालो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. ओके, सेकंड मेथड, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डायरेक्टली A and B, ओके, विल गो फॉर A by B. नाउ सी, इसके लिए थोड़ा आईक्यू लगाना पड़ता है, क्लास अपने आप आ जाएगा. सो वी नो ये इक्वेशन तो आ गया, P equals to A by B square and B equals to B. ठीक है ना? I will try to get A by B for ball. Now see, what is B? B is V, and V square है ना. इस एक V को इधर शिफ्ट कर देता हूं, PV equals to A by B. अब इस V की जगह B नहीं लिख सकता. क्लियर? तो आ गया ना A by B डायरेक्टली PV. अब डायमेंशन निकाल. व्हाट इज P? फोर्स बाय एरिया वॉल्यूम. फोर्स बाय एरिया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, एरिया इज मीटर स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करो तो यहां से भी आंसर हो जाएगा, यहां से भी आंसर हो जाएगा. Okay, so both the ways we can do the same question. Okay, sometimes in the boards they ask you like this also. Find the dimension formula of A square B. तो क्या करोगे? वही A निकालो, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो A निकालो, B निकालो, डायमेंशन डालो, होल स्क्वायर करो, अपने आप आ जाएगा. Understand? So don't worry about this square. Do the normal calculation. You got A value. Where is A? This is A. इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? M square L to power 10 T to power minus 4. You understand how you can do those questions? Okay, now let's go to the next one. Okay, question number 4. This question is very interesting and it's in NCERT. Okay, that is in the NCERT question, and the question is quite tricky because the language is tricky. So let's read the language what is given in the question. The number of particles given by n equals to minus d bracket small n2 minus small n1 divided by x2 minus x1 are crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time. Small n1 and small n2 are number of particles per unit volume at x1 and x2. Find the dimension formula of capital D, diffusion constant. That D is diffusion constant. Okay. Okay, मुझे capital D का डायमेंशन निकालना है तो ये रहा इक्वेशन दिया हुआ. I have written that equation. In this equation, which quantity dimension formula I need? Capital D. So keep the capital D in one side, rest other side shift किया. N into this x2 minus x1 and small n2 minus small n1 नीचे आ जाएगा minus के साथ. So understand what I'm doing? I'm keeping D one side, rest I'm shifting other side. So I got this equation. Now this n minus negative sign, it is creating a problem. So I will remove this negative sign. तो minus को into कर दूंगा तो n1 आगे आ जाएगा minus n2. ऊपर क्या है nn x2 minus x1. Same thing. Okay, now to get the value of diffusion constant D, we should know the dimension of small n.
the dimensions of x1 x2, the dimensions of small n1 small n2, इनका dimensions निकालना पड़ेगा ना मेरे को, तभी तो मैं डाल के मैं d का dimension निकालूंगा. That is the big issue here in the question because the language is a little bit different. So try to understand what is this n. So number of particles. The number of particles given by n. That is what is n? Number of particles. पर अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लाइन को पढ़ो. The number of particles given by n are crossing a unit area perpendicular x-axis in unit time. So these two things basically students ignore. It is the number of particles. Forget about these things, huh? इसको भूल जाओ. The number of particles crossing a unit area in unit time. So what is small n? Number of particles divided by area into time. Per unit area per unit time. Clear? So अब डायमेंशन लिखते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कुछ नहीं, डायमेंशन तो नहीं होता नंबर का, तो 1 लिखा है. एरिया मतलब एल स्क्वायर, टाइम मतलब टी. तो स्मॉल एन का डायमेंशन कितना हो गया? एल माइनस 2, ऊपर जाएगा माइनस 2, टी माइनस 1. नाउ व्हाट इज x1 x2? सी x axis is the distance. x1 x2 is the distance along the x axis. Okay, so what is x1 x2? Is the distance along x axis. Are the two different points along x axis, x1 and x2. So it is distance, that means this dimension is L. Now what is small n1 and small n2? That is clear. Number of particles per unit volume. So number of particles by volume. This is clear. Here the students get problem. Okay, they ignore area and time. So again, number of particles dimension is nothing, 1. Volume is L cube. When it go up, it becomes L minus 3. So all those substitute here. In the place of n, I am substituting the dimension of n. In the place of x1 x2, L minus L. In the place of small n1 minus small n2, L minus 3 minus L minus 3. Okay, solve it. L minus L is not 0, dimension पढ़ रहे हैं ना. L minus L L होता है. L minus 3 minus L minus 3 L minus 3 होगा. So solve कर लो. You will get L to T minus 1. Okay class. Okay, let's go to the next one. Okay, now let's go to a small touch of entrance. Okay, question 5. Given that integration dx divided by under root 2ax minus x square equals to a to the power small n sin inverse x minus a by a, where a is constant, find the value of n. ये क्वेश्चन को देख के कहीं समझ नहीं आएगा कि डायमेंशन का क्वेश्चन है. सबसे पहला बात, ठीक है, एक वैल्यू निकालना, इंटीग्रेशन है, कितना कुछ है, साइन इनवर्स है. ओके, तो अब सुनो ध्यान से. यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बोला गया है वेदर x इज मास, फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, कुछ नहीं पता. लेकिन ये इक्वेशन तो करेक्ट है ना, ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना कि इक्वेशन गलत है. इक्वेशन करेक्ट है बोल के तो n का वैल्यू निकालना है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन इज करेक्ट. फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. दैट मींस इफ द इक्वेशन इज करेक्ट, दैट मींस dimension of LHS and dimension of RHS must be equal, same होना चाहिए. So we'll use this concept here. Okay, now dimension x a में क्या dimension डालूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है x क्या है, a क्या है. I don't know what is x, what is a, right class? Understand? So if I don't know, but I know one thing. यहाँ देखो x और a दोनों subtraction में है. इसका मतलब x और a equal होगा, dimension भी तो equal होगा. क्या होगा? लेंथ होगा, मास होगा, नहीं पता. तो लेट x equals to a equals to l डायमेंशनल. मैंने l मान लिया उसको, तुम m मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम m लो कि चलो तुम्हारा आ जाएगा आंसर. क्लियर? लेकिन दिस इज ट्रू दैट दे टू हैव same dimension because they are in subtraction and the equation is correct. Clear? Okay, what is that dimension? That I don't know. That is fixed that x is equals to a dimensionally, but that will be equals to l or it will be something else that I don't know. So I'm considering let l. अब dimension डालो equation में, integration x is length, what is dx? Small length, l ही आएगा. x भी length है तो dx भी small length है, तो dx की जगह l लिख सकते हैं, divided by under root. When we put dimension, 2 is a constant, will go. So l into l, l square. A is l, x is l. L into l, l square minus l square equals to a to power in the place of a, l to power sin inverse x minus x. X की जगह l, a की जगह l divided by l. I'm writing the dimensions. Okay. Now integration l divided by l square minus l square under root l square only equals to l to power. This is dimensionless. m0 l0 t0 l minus l by l l कर देगा. Dimensionless नहीं आ रहा है. Okay, now what is integration? L by L, under root L square becomes L, so L कट जाएगा, so L 0 आ जाएगा. Clear? L by under root L आ जाएगा नीचे भी. Under root L square is L, L cancel, integration of L square.
What is integration of L? Not L square, L0. L0 plus L0 plus L0, it will remain as L0. We did one question earlier also. So integration L0 is L0 plus L0 plus L0. It will remain as L0 equals to L2 by n. देखो दोनों तरफ LL same है. What is N? 0. आगे n का value. Clear class? Okay. Next question. The time dependence of a physical quantity, capital P, is given by capital P equals to P naught P0 exp bracket minus alpha T square bracket close comma alpha is constant. Find the dimension of alpha. Now why I am doing this question? Just to make you understand what is exp. Okay, I told you, but I didn't put too much focus on that when we doing integration and differentiation. मैंने बताया था e small e क्या है, exponential, इसका वैल्यू फिक्स होता है. That exp is exponential. See, p equals to p naught exp minus alpha t square. इसी क्वेश्चन को लिख दिया. अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखेंगे. p equals to p naught exp मतलब e जो भी होगा ये पावर में होगा. exp of something means e to the power minus alpha t square. Only this much you need to understand. Now e के पावर में जो भी होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है ना, पढ़ा था हमने. तो अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस होगा, m0 0 t0. तो अल्फा का निकालना है तो टी स्क्वायर नीचे लेके आओ. व्हाट इज टी स्क्वायर? व्हाट इज टी? डू यू नो व्हाट इज टी? इज इट गिवन? व्हाट इज टी? द टाइम डिपेंडेंस. दैट इज टी इज टाइम. यहां से पता चलता है मेरे को, और कुछ नहीं दिया हुआ है, खुद से सोचना पड़ेगा. ओके, सो टी इज टाइम, तो टी स्क्वायर तो ऊपर जाएगा t minus 2. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ alpha. You understand? Now I will be writing few questions as a homework. Okay, wait for some time. Okay, class. Now these are the two questions which you will do as a homework. Question number 8: the position x of a particle at time t, small t, is given by small x equals to capital V0 divided by small a bracket 1 minus e to the power bracket minus a t bracket close, again a big bracket close, where V0 is constant. Find the dimension of V0 and a, small a. Question mark. Answer: V0 का dimension कितना है? L t minus 1. A का dimension t minus 1. This is the homework. Next, question number 9. Find the dimension of a by b such that p equals to a minus t square divided by bx, where p is pressure, x is distance, t is time. Okay, answer is m1 t minus 2. Now this is the end of the dimensional analysis. Now in this there is one topic which is a theory topic, that is limitation of dimensional analysis. Limitation of dimensional analysis. Now this topic you will write down in your notebook, and then you will write down like simply from refresher. When you have the refresher, when you have the book, this topic you will study from there. You need to at least remember 3 to 4 points of limitation. I am discussing right now. Okay, what are the limitations? See, while doing the numericals only you understand the limitations. First is that when you derive an equation using dimension analysis, while deriving the k which we put, k is a constant of proportionality करते थे ना derive की equation में, उस k का वैल्यू निकाल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से? नहीं. तो ये एक लिमिटेशन हो गया ना. हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके while deriving the equation we cannot find the k constant. Clear? More. Next, we cannot derive those equations which have trigonometry inside using dimension analysis. Okay. तीसरा, we cannot derive the physical quantities if it is depend on more than 3 physical quantities. अभी देखना, जितना भी क्वेश्चन तुमने किया ना, मान लो p depends on something something something, ये सिर्फ 3 ही होता था या 3 से कम हो सकता है. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जांपल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फॉर एग्जांपल L, एंड फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. सो वी राइट लाइक दिस, m2 पर a, l2 पर b, v2 पर c. देन वी डिराइव इट, राइट? नाउ वी हैव ओनली 3 or less than 3. We cannot derive those quantities formula which depends on more than 3 physical quantities. So these are the few limitations. Okay, from the book there will be many more. You will study 3 to 4 points for the exam and this class in the examination. So this is the end of dimension analysis class. Next we will start the error calculations. Okay, error analysis we will do. That is also a part of
second chapter only. Okay, thank you very much.